Hello students, Jinali Shah welcomes you all on behalf of Saraswat International Academy. Today we will begin with the next part of the chapter Structural Organization in Animals. Students, in the previous video we have studied regarding the epithelial tissue. In today's video we will be studying regarding the remaining three types of the animal tissues. They are connective tissue, muscular tissue and the neural tissue. So let us begin with the chapter and let us start with the connective tissue. Name itself suggests connective, so it is associated to connect the different parts of the body. So basically the connective tissue, it connects or it joins the different structures of the body. Students, the connective tissues are most abundant and widely distributed in the body of complex animal. So one of the most abundant tissue found in the animals is the connective tissue. They are named connective tissues because of their special function of linking and supporting the other tissues or organs of the body. Now, why are they called as connective tissue? The main reason is their important function is to link, is to connect and support the other organs or other tissues of the body. This tissue has less number of cells. See students, these properties are very important. So number of cells in these tissues are very less. It has more intercellular fluid. Yani ki what is intercellular fluid? Inter, that is between, cellular, that is cell. So as there is less number of cells and the cells are having the gap, that is called as the intercellular space. Now between that space is the presence of the intercellular fluid. Now who secretes this fluid? So this fluid is secreted by the cells of the tissue. See students, the number of cells are less and they are arranged loosely. Between the cells is the intercellular space which is filled by the intercellular fluid. This fluid is secreted by the cells of the tissue itself. New cells are formed by the division of pre-existing cells. So already existing cells जो है उनके division से new cells will be formed in this tissue. They range from soft connective tissues to specialized types which includes cartilage, bone, adipose and blood. So these are the various types of the connective tissue which I will be showing through the chart. In all connective tissues except blood, the cells secrete the fibers of the structural proteins called collagen or elastin. Now see students, blood is a type of the connective tissue. Except for the blood, each and every connective tissue's cell will secrete the fibers which are made up of the proteins like collagen or elastin. Which means that the cells of the blood, they do not secrete the fibers. Except for the blood, all other connective tissues cells, they secrete the fibers of the structural protein. They secrete the fibers which are made up of the structural proteins collagen or elastin. Now what is the importance of fibers? So the fibers, they provide strength, elasticity and flexibility to the tissues. These cells also secrete modified polysaccharide which accumulate between the cells and fibers and act as a matrix or ground substance. I told you that there is the presence of the intercellular fluid which is secreted by the cells. So that intercellular fluid's chemical nature is polysaccharide. What type of intercellular fluid is secreted? It is a polysaccharide. Now this polysaccharide, it accumulates between the cells and the fibers. So what is a function of cell? The cell secretes the fibers as well as it secretes the polysaccharides. These fibers and polysaccharides, they get accumulated, or where are they present? In the intercellular space. So suppose this is cells, these are fibers, in between them is the space. This space is filled with the polysaccharide and this fluid or
polysaccharide is called as a matrix or also called as a ground substance. Now see students, this is a classification of a connective tissue. The connective tissues are broadly divided into three types: loose connective tissue, dense connective tissue and specialized connective tissue. What is the loose connective tissues? So here there is more matrix but less fibers. So amount of intercellular fluid is more but the amount of fibers is less. And why it is called as a loose connective tissues? So the cells and fibers, they are loosely arranged in a semi-fluid matrix. So there is a ground substance, there is a matrix. ये matrix में जो cells है and fibers है, they are arranged loosely and therefore it is called as a loose connective tissue. Loose connective tissue is further divided into two categories. One is areolar tissue and another one is the adipose tissue. Now next type of the connective tissue is a dense connective tissue. So what was the condition of the loose connective tissues? Fibers were less, matrix was more. Here it is totally opposite condition. There are more fibers but less matrix. Amount of fibers is more and the amount of the matrix is less. Here the cells and fibers are compactly arranged in a semi-fluid matrix. Loose connective tissue में क्या था? जो cells and fibers होते थे, they were arranged loosely, whereas in the dense connective tissue, the cells and fibers, they are compactly or tightly arranged in the semi-fluid matrix. Now this connective tissue is further divided. Dense connective tissue, it is further divided into three categories: dense regular tissue and dense irregular tissue. So what is a dense regular tissue? Here there will be the regular pattern of fibers, that is fibers will be arranged in a proper manner. Whereas in the dense irregular tissue, the fibers are arranged in an irregular pattern. Irregular yani they will be forming a network like structure. They will be scattered. They won't be arranged in a proper manner. Whereas regular tissue में क्या होता है? जो भी fibers होते हैं, they are arranged in an regular pattern, which means कि उनका अरेंजमेंट कैसा होगा? आइदर पैरेलल फॉर्म में या कैसे भी, बट दे विल बी अरेंज्ड इन द प्रॉपर मैनर. सो दैट वाज द डेंस रेगुलर टिश्यू. नाउ स्टूडेंट्स, द स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. So there are two specialized type of the connective tissue. One is the skeletal tissue and another one is a fluid connective tissue. These are the two types of the specialized connective tissue. Skeletal tissue is further divided into cartilage and bone, whereas fluid connective tissue is further divided into blood as well as the lymph. So this is the general classification of the connective tissue. We will study each of them in brief. So let us begin with the first type of connective tissue, that is called as a loose connective tissue. So loose connective tissue has cells and fibers loosely arranged in a semi-fluid ground substance. ये हमने देखा. Two types, one is areolar and another one is adipose. So let us begin with the first type, that is a areolar type of the connective tissue. Now where is this areolar type of connective tissue seen? So it is present beneath the skin, यानी skin के नीचे, in the gastrovascular cavity, that is in the digestive cavity. Then another location is a peritoneum. So what is a peritoneum? It is a membrane which lines the abdominal cavity and covers the abdominal organs. So abdominal cavity और abdominal organs जो होते हैं उनके सराउंडिंग जो मेम्ब्रेन होती है, that is called as the peritoneum. And in the mesentery, what is a mesentery? It is a membrane that attaches the intestine to the abdominal wall and holds it in a place. So जो membrane intestine को abdominal wall से attach रखती है and
इंटेस्टाइन को अपनी प्लेस पे रखती है, दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द मेसेंट्री. So it is found in the mesenteries which is surrounding the intestine and in the walls of the arteries and at many other places. So these are some of the locations where the areolar tissue is present: beneath the skin, in the gastrovascular cavity, in the peritoneum and in the mesentery, which is found surrounding the intestine as well as in the walls of the arteries. And apart from this, it is also present at many other locations. It serves as a support framework for the epithelium. Epithelial tissue को support करने का काम किसका है? Areolar tissue. मैंने बोला था कि always epithelial tissue के नीचे connective tissue रहता है. So the main connective tissue which lies below the epithelial tissue is the areolar tissue. Now structure of the areolar tissue. So areolar tissue, it consists of the transparent jelly-like sticky and thick matrix which consists of numerous fibers and cell. So what is areolar tissue made up of? It is made up of, or it consists of, a jelly-like thick matrix. So इसका जो matrix, इसका जो ground substance, where is ground substance present? Between the cells and fibers. So ये जो matrix है, ये जो ground substance है, it is which type of ground substance? It is transparent, jelly-like, sticky and thick. And this ground substance, or you can say matrix, it consists of large number of fibers and cells. Now there are two types of fibers. One is white fibers and another one is yellow fibers. So what are the differences between white and yellow fibers? So first of all, white fibers, they are abundant, very fine and wavy. Whereas when we talk about yellow fibers, they are fewer, they are thicker than the white fibers and they are straight. Whereas जो white fibers थे वो कैसे थे? Wavy थे. Whereas the yellow fibers are which type of fibers? Straight fibers. Now the white fibers, it occurs in bundles, it occurs in group, whereas the yellow fiber, it occurs singly. The yellow fibers, it occurs singly. Now the white fibers, they are flexible but are inelastic and unbranched, whereas the yellow fibers, they are also flexible but they are elastic and they are branched. The white fibers are made up of the protein called as the collagen, whereas the yellow fibers are formed of the protein called as the elastin. So these are the structures of the yellow and white fibers. White fibers, they are abundant, they are very fine, यानी delicate, and they are wavy. Whereas yellow fibers कैसे है? They are few, they are thicker as well as they are straight. White fibers always occur in bundles, whereas yellow fibers, they occur singly. White fibers are inelastic and unbranched, whereas yellow fibers are elastic and branched. The white fibers are formed of protein collagen, whereas the yellow fiber is formed of the protein elastin. Now very important note, the spaces left between the fibers are called areolae, hence the name areolar tissue. Why this tissue is called as the areolar tissue? The reason is whatever space is present between the fibers, that space which is left between the fibers is called as the areolae. And due to the presence of areolae, this tissue is called as the areolar tissue. Now, apart from the fibers, it also consists of the cells. So basically there are three types of the cells found in areolar tissue. One is fibroblast, another one is macrophages, and lastly the mast cell. So first of all, fibroblast. These are the main cells of the tissues. They are large, they are flat or spindle-like cells, or they may be irregular in shape along with the long processes and the oval nucleus. ये cells कैसे हैं? They are large, flat or spindle shaped cells, or they may be irregular in shape.
बट जो भी सेल्स हो गए उसमें से प्रोसेस निकलेंगे. प्रोसेस यानी सपोज दिस इज अ सेल. So this outgrowth is called as what? It possesses the long processes. These are called as the processes, and it consists of the oval nucleus. Now fibroblasts का काम क्या है? So they form the protein fibers called collagen and elastin. हमने देखा कि दो टाइप के फाइबर्स होते हैं. One is white fibers of protein collagen and another one is yellow fibers of protein elastin. So ये फाइबर्स बनाता कौन है? सो जो सेल्स है, द नेम ऑफ द सेल्स इज फाइब्रोब्लास्ट. नेम से ही मालूम पड़ता है उनका काम है फाइबर्स को सिक्रेट करना. सो द फाइब्रोब्लास्ट दे फॉर्म द प्रोटीन्स विच आर कॉल्ड एज द कोलाजन एंड इलास्टिन. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर द सेल्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ मैट्रिक्स. यानी मैट्रिक्स और ग्राउंड सब्सटेंस एज वेल एज फाइबर्स का सिक्रेशन कौन करता है? फाइब्रोब्लास्ट. The second type of the cells are macrophages. So students, these are large irregular shaped cells. उनका काम है to engulf the microbe or any foreign particle and damage cells and perform phagocytosis. जो भी foreign particle होगा, जो भी microbes होगा या damage cells tissue में होंगे, इनको ये macrophages क्या कर लेंगे? खा लेंगे, and they will destroy these particular cells. And lastly, the third type of the cells are the mast cells. These are the small oval cells. इनका काम करना है to secrete heparin, histamine and serotonin. ये तीन chemicals को secrete करते हैं. One is heparin, another one is histamine and lastly serotonin. Heparin का काम क्या है? So it prevents the clotting of the blood in uninjured blood vessels. क्या आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉट होता है? नो. ओनली अगर आपकी बॉडी में ब्लड वेसल इंजर्ड है. से फॉर एग्जांपल यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी इंजुरी, एट दैट टाइम ब्लड कम आउट. सो वो टाइम पे वो पर्टिकुलर प्लेस पे ही ब्लड क्लॉट होता है. अदरवाइज इन द अनइंजर्ड ब्लड वेसल नेवर द ब्लड क्लॉट्स. सो बेसिकली क्यों ब्लड क्लॉटिंग होता नहीं है? सो ब्लड में नेचुरल एंटी कोएगुलेंट होते हैं. एंटी अपोजिट कोएगुलेंट यानी ब्लड को कोएगुलेट नहीं होने देता है. सो वन ऑफ द एंटी कोएगुलेंट प्रेजेंट इन द ब्लड इज द हिपेरिन. सो इट प्रिवेंट्स द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड. इट डज नॉट अलाउ द ब्लड टू क्लॉट इन एन अनइंजर्ड ब्लड वेसल्स. The second chemical is histamine, which is involved in allergic and inflammatory reactions. So allergy और inflammatory reactions में जो inflammatory यानी swelling को जो बोलते हैं that is called as inflammation. So allergic reactions and inflammatory reactions में कौन के लिए कौन responsible है? Histamine. And lastly it is a serotonin, which is a vasoconstrictor. वेसो का मीनिंग क्या होता है? ब्लड वेसल. ओके, वेसो इट मीन्स ब्लड वेसल. एंड कंस्ट्रिक्ट करना यानी उसको क्या करना? कंप्रेस करना, कॉन्ट्रैक्ट करना. सो ये ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग बंद हो जाएगा एंड इट रेजेस द ब्लड प्रेशर. सो सीरोटोनिन इट इज़ अ basically a vasoconstrictor. Vaso related to blood vessel, constrictor यानी contract करना, constrict करना, उसकी cavity को narrow करना. So अगर blood vessels की cavity narrow हो गई तो क्या होगा? Of course the blood pressure increases, which will finally stop the bleeding. So these are the three cells which are found in the areolar tissue. See students, this is a diagram of a areolar tissue. This is a macrophage जो क्या करता है? डैमेज सेल्स, फॉरेन पार्टिकल्स और माइक्रोब्स को एनगल्फ करके उनको डिस्ट्रॉय करता है. See students, this is a fibroblast. It is an irregular shaped cell. और ये जो बाहर निकला है ये क्या है? These are the processes of the fibroblast. And this is a oval nuclei of the fibroblast. फाइब्रोब्लास्ट ये सेल के अंदर मैंने क्या बोला था? क्या होते हैं? देयर प्रेजेंस ऑफ द फाइबर्स. सी स्टूडेंट्स, दिस आर द वाइट फाइबर्स मेड अप ऑफ द कोलाजन. और देखो ये कैसे है? दे अकर इन द ग्रुप. ओके, एंड देन
there is the presence of another cells which is called as the mast cell. ये वाले सेल को क्या बोलते हैं? मास्ट सेल, जिसका काम क्या है? टू सिक्रीट द हिपेरिन, हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन. So this is the structure of the areolar tissue. Now students, the next type of a loose connective tissue is adipose tissue. So basically it is another type of the loose connective tissue which is located mainly beneath the skin. So अपनी स्किन के नीचे जो दूसरा टिश्यू होता है वो एडिपोज टिश्यू होता है. It is found in mesenteries, in the covering of the heart and also around the blood vessels and kidneys. So what is the another locations? Mesenteries, then covering of the heart and around the blood vessels and kidneys. It also forms the yellow bone marrow. अपनी bones में place होती है which is called as a marrow. Marrow दो टाइप के होते हैं, red marrow and yellow marrow. जो रेड मैरो होता है वो ब्लड का फॉर्मेशन करता है एंड येलो मैरो इट स्टोर्स द न्यूट्रिएंट्स. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर द फैट्स. ओके, इसके जो सेल्स होते हैं, जो सेल्स एरियोलर टिश्यू में थे जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफाजेस एंड मास्ट सेल, ये तीन सेल्स भी ये टिश्यू में रहेंगे. बट ये तीन के अलावा देर इज अनदर सेल प्रेजेंट कॉल्ड एज द फैट सेल और एडिपोसाइट्स. ये टिश्यू में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल प्रेजेंट इज द एडिपोसाइट और ऑल्सो कॉल्ड एज द फैट सेल. एंड ये सेल की पिक्यूलरिटी क्या है? The important feature of this adipocyte or fat cell is to store the fats. So the matrix of this tissue is packed with large spherical or oval fat cell or the adipocytes. See students, आपके बुक में सिर्फ एडिपोसाइट्स है ऐसा लिखा है, बट अपार्ट फ्रॉम एडिपोसाइट्स जो एरियोलर टिश्यू थे जिसमें क्या थे? फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफाजेस एंड द मास्ट सेल, ये भी यहाँ पे हो गए. बट जो मैक्सिमम अमाउंट में जो सेल्स यहाँ पे दिखेंगे वो है एडिपोसाइट्स, जिनका काम है टू स्टोर द फैट. The excess of the nutrients which are not used immediately are converted into fats and are stored in the tissues. अपनी बॉडी में डाइजेशन होकर जो भी न्यूट्रिएंट्स बचता है, उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स एक्सेस होता है, यानी कि जो इमीडिएटली यूज़ नहीं होने वाला होता है, वो जो फूड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? फैट में. एंड आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड इनटू फैट दे आर स्टोर्ड इन द एडिपोज टिश्यू. See students, this is a fat cell और एडिपोसाइट. ये यहाँ पे फैट स्टोर होता है. This is a nucleus and this is the plasma membrane of the adipocyte. Now students, next type of the connective tissue is the dense connective tissue. So here fibers and fibroblasts are compactly packed in a dense connective tissue. So जो फाइबर्स होते हैं एंड जो सेल्स होते हैं, यहाँ पे मेन सेल्स कौन से हैं? फाइब्रोब्लास्ट. सो ये फाइब्रोब्लास्ट एंड ये जो फाइबर्स होते हैं, सो ये मैट्रिक्स में कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं. ओरिएंटेशंस ऑफ फाइबर्स शो अ रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न एंड आर कॉल्ड एज डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर टिश्यूज. अगर फाइबर्स दे शो द रेगुलर ओरिएंटेशन, then it is called as a dense regular tissue, and if the fibers shows irregular pattern, then they are called as the dense irregular tissues. In the dense regular connective tissue, the collagen fibers are present in rows between many parallel bundles of fibers. So basically here there will be the parallel bundles of the पहले तो फाइबर्स कैसे अरेंज है? दे आर अरेंज इन द रोज एंड दिस रोज आर ये रोज में फाइबर्स कैसे अरेंज्ड है? इन द पैरेलल मैनर. नाउ इसका एग्जाम्पल कौन सा है? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. इट एग्जाम्पल इज अ टेंडन. सो टेंडन इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू विच अटैच द स्केलेटल मसल्स टू द बोन्स. ओके,
सो स्केलेटल मसल्स को बोन के साथ अटैच कौन करता है? टेंडन्स. And another is the ligaments which attach one bone to another. These are the examples of the tissue. So tendons, जो tendons का काम क्या है? किसको कनेक्ट करना? स्केलेटल बोन्स को स्केलेटल मसल्स को बोन्स के साथ करना. अगर बोन्स मसल के साथ अटैच हो गए तो ही बॉडी में मूवमेंट पॉसिबल है. सो बोन्स को मसल के साथ, वन ऑफ द टाइप ऑफ द मसल इज द स्केलेटल मसल, उसके साथ कनेक्ट कौन करता है? टेंडन्स. दिस टेंडन्स इज अ रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. एंड लिगामेंट्स क्या होते हैं? जो दो बोन्स को कनेक्ट करते हैं. सो दिस आर अगेन द एग्जाम्पल ऑफ द टिश्यू. Dense irregular connective tissue has fibroblast and many fibers, mostly collagen, that are oriented differently. ओके, सो जो इरेग्युलर टिश्यू होते हैं उनमें फाइब्रोब्लास्ट होते हैं एंड बहुत सारे फाइबर्स जो कोलाजन के बनते हैं वो होते हैं. बट ये फाइबर्स का ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट प्रॉपर. दे आर ओरिएंटेड डिफरेंटली. दिस टिश्यू इज़ प्रेजेंट इन द स्किन. So that is regarding the dense connective tissue. See students, this is a dense regular tissue and this is a dense irregular tissue. यहाँ पे fibers का orientation proper है, यहाँ पे fibers का orientation proper नहीं है. Now the next type is the specialized connective tissue. There are two types of the specialized connective tissue. One is the skeletal tissue and another one is the fluid connective tissue. So cartilage, bones and bloods, they are the various types of the specialized connective tissue. The cartilage and bones are also called as the skeleton connective tissue. They are also known as supporting tissues because they provide support to the body. Okay, so cartilage and bone, they are called as the skeleton connective tissue. Apart from that, they are also called as supporting tissues. Why are they called as supporting tissue? Because they provide the support to the body. So first of all, let us study regarding the cartilage. The intercellular material का दूसरा नाम क्या है? It is also called as the ground substance or also it is called as the matrix. So इसका जो matrix है, इसका जो ground substance है, ये किसका बना है? It is solid, it is pliable. Pliable means flexible. And it will resist compression. So intercellular material of cartilage, it is solid and pliable and it resists the compression. Cells of these tissues, so basically tissue है, tissue is a group of cell. So ये tissue के cells को क्या बोलते हैं? chondrocytes. Listen very carefully. The cells of the cartilage are called as chondrocytes. Now basically chondrocytes क्या होगा? सपोज ये कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज में क्या होता है? ये पूरा क्या है? मैट्रिक्स है. दिस कंप्लीट इज व्हाट? दिस कंप्लीट इज अ मैट्रिक्स. ओके, नाउ ये मैट्रिक्स के अंदर क्या होती है? कैविटीज होती है. दिस आर द कैविटीज विच आर फाउंड इन द मैट्रिक्स. ये कैविटी को बोलते हैं लेक्यूना. What are this cavity called as? Lacuna. And within this lacuna कौन arranged होते हैं? Cells. So where are the cells present in the tissue? So in the matrix of the tissue is the presence of the small cavities. These small cavities are called as the lacuna. And within this lacuna the chondrocytes are present. So cells of this tissue, that is chondrocytes, are enclosed in the small cavities within the matrix secreted by them. Most of the cartilage in vertebrate embryos are replaced by bones in adults. So embryonic condition में mostly cartilage होते हैं जो adult condition में bone से replace हो जाते हैं. Cartilage is present in the tip of the nose. Adults में cartilage present कहाँ पे होता है? So it is present in the tip of the nose, in the outer ear joints, in between the adjacent bones of the vertebral column. Vertebral column में vertebra होते हैं, right? ये vertebra के बीच में intervertebral disc होती है जो किसकी बनी होती है? It is made up of the cartilage.
It is also present in limbs and hands in the adults. So these are the places where cartilage is present. So what is cartilage? Basically उसका matrix कैसा होता है? It is solid and pliable but resists the compression. Okay, ये matrix में small cavities होती है and ये cavities के अंदर कौन होता है? Cells of this tissue. And what are they called as? They are called as the chondrocytes. See students, this is a cartilage cell, these are the collagen fibers, and ये जो chondrocytes है, the cartilage cell also called as the chondrocyte. Now students, the next type of the skeleton tissue is the bones. So bones have a hard and non-pliable ground substance, जबकि कार्टिलेज का कैसा था? सॉफ्ट एंड प्लायबल, जबकि यहाँ पे हार्ड एंड नॉन प्लायबल. It is rich in calcium salts and collagen fibers which gives the bones its strength. Okay, bone and cartilage में फ़र्क ही ये है कि bones बहुत ज़्यादा strong होते हैं. क्यों? क्योंकि इनका जो मैट्रिक्स होता है उनमें कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं and large number में collagen fibers होते हैं. And due to the calcium salts and collagen fibers, it provides the strength. It is the main tissue that provides the structural frame to the body. यानी अपनी बॉडी का जो शेप है, जो फॉर्म है, वो कौन देता है? It is the bones. Bones support and protects the softer tissues and organs. जैसे अपनी बॉडी में ब्रेन है, ब्रेन को कवर कौन करता है? क्रेनियम. क्रेनियम किसका बना है? बोन का. देन देर इज़ अ हार्ट, देन देर इज़ अ लंग. ये सब चेस्ट कैविटी है. चेस्ट कैविटी बनाती कौन है? रिबकेज है. सो ये रिबकेज किसका बना है? बोन्स का. नाउ द बोन सेल्स आर प्रेजेंट इन द स्पेसेस कॉल्ड एज लैक्यूना. सेम जैसा कार्टिलेज में मैंने बोला, सपोज दिस इज द बोन, ये बोन के अंदर मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स के अंदर कैविटीज़ है. व्हाट आर दिस कैविटीज़ कॉल्ड एज? हियर ऑल्सो दिस कैविटीज़ आर कॉल्ड एज द लैक्यूना. अभी ये लैक्यूना के अंदर क्या होते हैं? बोन के सेल्स होते हैं. What are the cells of the bones called as? They are called as the osteocytes. So the bone cells, they are present in the spaces called as lacuna. मेन है मैट्रिक्स. मैट्रिक्स के अंदर कैविटीज होती है जिसको बोलते हैं लैक्यूना, एंड ये लैक्यूना के अंदर बोन सेल्स जिसको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स, दे आर प्रेजेंट विद इन द लैक्यूना. Limb bones such as long bones of leg, they serve weight bearing functions. अपनी बॉडी का पूरा वेट कौन लेता है? So it is the long bones of the legs. They also interact with the skeletal muscles attached to them to bring about movements. We show different kinds of movement. So movement के लिए responsible कौन है? Basically muscles. But muscles, these skeletal muscles are attached to the bone, and this results in the different forms of the movement. The bone marrow. Marrow is a soft spongy tissue which is present inside the bone. In some bone is a site of production of blood cell. So अपनी बॉडी के जो लॉन्ग बोन्स होते हैं मेनली, उसके अंदर सॉफ्ट टिश्यू रहता है जिसको बोलते हैं मैरो, एंड ये मैरो इज अ साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड सेल्स. ब्लड का फॉर्मेशन या ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कौन करता है? बोन मैरो. See students, this is a compact bone tissue and this is a lacuna, and ये lacuna के अंदर क्या है? osteocyte present है, which is called as a bone cell. Now next type of the connective tissue is blood. So blood is a fluid connective tissue which consists of the fluid part called as the plasma and the cellular part which consists of red blood cells, white blood cells and platelets. सी ब्लड को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पे हम डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे 11th स्टैंडर्ड में. 12th स्टैंडर्ड में यू विल स्टडी द ब्लड इन डिटेल. सो ब्लड का दो पार्ट है, वन इज़ द फ्लूइड पार्ट एंड अनदर वन इज़ द सेल्यूलर पार्ट. ओके, सो द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज़ कॉल्ड एज द प्लाज्मा. व्हाट इज़ द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड? कॉल्ड प्लाज्मा. एंड सेल्स कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स, RBCs, platelets and WBCs. Now it is a main circulating fluid that helps in the transport of various substances. अपनी बॉडी में जो मेन ट्रांसपोर्टेशन का काम है
वो कौन करता है? ब्लड। पूरी बॉडी में जो वाइड लार्ज अमाउंट में सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है वो कौन सा होता है? ब्लड। एंड उसका काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिफरेंट substances. So that is regarding the blood, which is a fluid connective tissue. So we have completed regarding the connective tissue. Now let us begin with the next type of the tissue, which is called as the muscle tissue. Now जैसे हर कोई टिश्यू मसल का बना है, सेम वे जैसे हर कोई टिश्यू सेल का बना है, सेम वे मसल टिश्यू इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल. एंड ये जो सेल्स होते हैं, दिस सेल्स आर कॉल्ड एज द फाइबर्स. सो सेल्स ऑफ द मसल टिश्यू आर कॉल्ड एज मसल फाइबर्स. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम थोड़ा ब्रीफ में स्टडी करेंगे. 12th स्टैंडर्ड में फिर से मसल्स का चैप्टर रहेगा, जिसमें हम डिटेल में मसल्स टिश्यू स्टडी नॉट इन 12th बट इन योर 11th स्टैंडर्ड लेटर पार्ट्स में पूरा ये चैप्टर रहेगा, जिसमें हम ये टिश्यू डिटेल में स्टडी करेंगे. So now students, as I told you, a tissue is made up of cells. So muscle tissue will be also made up of cell, and the cells of the muscle tissue, they are called as the muscle fibers. So each muscle is made up of many long cylindrical fibers which are arranged in parallel arrays. Arrays yani manner. So what is muscle made up of? It is made up of many cylindrical fibers which are arranged in the parallel manner. Now ये जो fibers है, these are the cells of the muscle tissue. ये fibers किसके बने हैं? So these fibers, they are composed of numerous fine fibrils which are called as the myofibrils. Fibers किसके बने हैं? The fibers are made up of the thin fibrils, and these thin fine fibrils are called as the myofibrils. Muscle किसका बना है? Muscle fibers का. Muscle fibers किसके बने हैं? They are made up of the myofibrils. Muscle fibers, they contract, that is they shorten in response to the stimulation. जैसे ही मसल फाइबर एक्टिवेट हो गए, जैसे ही उसको कोई मैसेज मिलेगा, वो एक्टिव हो गए, और जैसे ही वो एक्टिव हो गए वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए यानी वो शॉर्टन हो गए. Okay, after contracting they relax, that is lengthen, and return to their uncontracted state in a coordinated fashion. So muscles कभी भी contracted condition में नहीं रहेंगे. Contract हो गए फिर तुरंत ही वो relax हो गए यानी they come to their original position. And ये जो contraction and relaxation होता है, ये coordinated manner में होता है. Now what is their function? Their action moves the body to adjust to the changes in the environment and to maintain the positions of the various parts of the body. So by the action or by the virtue of the muscle tissue, our body, it moves and makes the possible changes which help us to adjust to the surrounding environment, and it also maintains the position of the various body parts. In general, we can say muscles play an active role in all movements of the body. अपनी बॉडी में जो भी कोई मूवमेंट होती है, it is all due to the muscles. Now ये muscles 3 टाइप के होते हैं: skeletal, smooth and cardiac. There are 3 types of the muscles. One is skeletal, another one is smooth, and lastly cardiac. So first of all, let us study regarding the skeletal muscle. So the skeletal muscle is closely attached to the skeletal bones. अभी देखो, इसको skeletal muscle क्यों बोला है? ये वाला muscles किसके साथ attached है? Bone के साथ attached है. As these muscles, they are attached to the bones. As these muscles, they are attached to the bones, they are called as the skeletal muscles. Now muscles मैंने बोला कि in a typical muscle such as biceps, straightened or stripped skeletal muscle fibers are bundled together in a parallel fashion. Now ये वाले muscle को straightened muscles भी बोलते हैं. What are these muscles also called as? These are also called as the straightened muscles or also called as the stripped muscles. Striations, strips यानी क्या हुआ? Layers दिखते हैं.
सो स्टूडेंट्स, हम जब डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट पीछे के चैप्टर्स में, तो हियर इट विल बी क्लियर कि यहाँ पे जो मसल फाइबर्स होते हैं दे आर अरेंज्ड इन बंडल्स. देखो, दिस आर द बंडल्स ऑफ द मसल फाइबर्स. ओके, ये बंडल्स के अंदर ये जो मायोफाइब्रिल्स है आप देख सकते हो. दिस इज डार्क रीजन, दिस इज लाइट रीजन, दिस इज डार्क रीजन, दिस इज लाइट रीजन. सो अल्टरनेट डार्क एंड लाइट रीजन दिखता है, जिसकी वजह से आपको लेयर्स दिखते हैं. And therefore this is called as the striated or stripped muscles. And ये bundles कैसे arranged है? See students, the bundles are arranged in the parallel fashion. See students, this is a bundle arranged, these are bundles arranged in the parallel fashion. अभी उसके अंदर dark region है, light region है, dark region है, light region है, जिसकी वजह से अपने को लगता है there are striations, there are layers, and therefore this muscle is also called as the striated muscles. A sheath of the connective tissue encloses several bundles of the muscle fibers. Bundles जब बनते हैं muscle fibers के, उसके surrounding there is a sheath of the connective tissue जो muscle fibers को protect करते हैं. Now next type of the muscle is a smooth muscle. Now smooth muscle fibers taper at both the ends and do not show striations. जैसे स्केलेटल मसल्स में स्ट्रेशन से अल्टरनेट डार्क एंड लाइट रीजन दिखता था, यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है. एंड दे आर टेपरिंग एट बोथ द एंड. बेसिकली ये स्पिंडल शेप्ड मसल फाइबर्स होते हैं. स्मूथ मसल फाइबर्स कैसे होते हैं? दे आर बेसिकली स्पिंडल शेप्ड मसल फाइबर्स. द सेल जंक्शंस होल्ड देम टुगेदर. हमने एपिथेलियल टिश्यू में जंक्शंस देखे थे. सो यहाँ पे जो सेल्स को कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं सेल जंक्शंस. सो द सेल जंक्शंस दे होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल्ड टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ. सो द बंडल्स बनेंगे एंड ये बंडल के सराउंडिंग क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होगा. ओके, वेयर आर दिस स्मूथ मसल्स फाउंड? They are found in the wall of the internal organs like blood vessels, stomach, intestine. So basically internal organs जो भी होते हैं उनमें जो muscles रहते हैं वो कौन से होते हैं? Smooth muscles. They are called as involuntary muscles. Involuntary ऐसी चीज़ जो अपने हिसाब से काम नहीं करती. Such structures are called as involuntary. So basically smooth muscles कैसे होते हैं? Involuntary. It means that their functioning cannot be directly controlled. अपने खुद से हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. So skeletal muscles जो होते हैं वो कैसे muscles होते हैं? Voluntary. What are voluntary muscles? Those muscles which work according to our will. Say for example तुझे walk करना है, तो suppose if I want to walk, so walking is done according to my will. यानी if I want to walk, I will walk. But if I don't want to walk, I won't. So ये अपने कंट्रोल में है. Skeletal muscles are under our control. Therefore they are called as the voluntary muscles. But ये जो smooth muscles है वो अपने कंट्रोल में होते नहीं है. And therefore they are called as involuntary control. Say for example, आपकी बॉडी में सपोज फूड इसोफेगस में है, इसोफेगस में से फूड जाएगा स्टमक में, राइट? सो क्या आप ये मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हो कि चलो मैं थोड़ी देर इसोफेगस में फूड रखता हूँ, बाद में जब चाहे तब मैं स्टमक में फूड पहुँचा दूंगा? इज दैट लाइक दैट? नो. सो सच मसल्स आर दोज मसल्स जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. They are not working according to the will of an organism. Such muscles are called as the involuntary muscles. We usually are not able to make it contract merely by thinking about it as we can do with the skeletal muscles. जैसे skeletal muscle को हम जब चाहते हैं तब contract कर सकते हैं अपनी thinking से, वैसे ये smooth muscles में possible नहीं है. See students, these are the spindle shaped muscle fibers और ये उसका bundle है. Okay, so this is the structure of the smooth muscles. The last type of the muscles found are the cardiac muscles. Name से ही मालूम पड़ता है. The muscles which are present in the wall of the heart, they are called as the cardiac muscle.
So it is a contractile tissue present only in the heart. The cell junction fuse the plasma membrane of the cardiac muscle cells and make them stick together. So there are cell junctions which are present in the cells of the cardiac muscle cells and ये cell junctions सब cells को connect करते हैं. Communication junctions are also called as the intercalated disc. At some fusion points allow the cell to contract as a unit. That is, when one cell receives a signal to contract, its neighbors are also stimulated to contract. Suppose ये एक cell है, ये एक दूसरा cell है. So दो cells के बीच में connections होते हैं which are called as the intercalated disc. What are these connections called as? Intercalated disc. अभी ये intercalated disc क्या करता है? It allows it to contract as a unit. से फॉर एग्जाम्पल ये वाले सेल ने मैसेज रिसीव किया कॉन्ट्रैक्शन का. ओके, सो ये इंटरकैलेटेड डिस्क क्या करती है? ये मैसेज नेबरिंग सेल को दे देंगी ताकि नेबरिंग सेल क्या करता है? वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा. सो इंटरकैलेटेड डिस्क इट अलाउज द सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट विच मीन्स when one cell receives a signal to contract, its neighbors are also stimulated to contract. So this is a cardiac muscles. See appearance में वो कैसा है? Skeletal muscle जैसा. यहाँ पे dark light areas दिखते हैं. But functionally वो कौन सा है? Involuntary. यानी क्या हार्ट को आप कंट्रोल कर सकते हो? क्या आप हार्ट में पंपिंग बंद कर सकते हो? No. So structurally it is similar to the striated muscles and functionally it is like the smooth muscles. And ये जो point है that is called as the intercalated disc. These are the junction points जो cells को क्या करते हैं? Connect करते हैं. So that is regarding the cardiac muscles. So that was regarding the neural tissue. Now let us begin with the last type of the tissue. That is the अभी हमने जो स्टडी किया वो मस्कुलर टिश्यू था, राइट? सो नाउ we will begin with the last type of the tissue, that is a neural tissue, or also it is called as the nervous tissue. Neural tissue बोलो या nervous tissue बोलो. Now students, इसका भी डिटेल स्ट्रक्चर हम लास्ट के चैप्टर्स में स्टडी करेंगे. यहाँ पे we will study a brief description regarding a neural tissue. Neural tissue exerts the greatest control over the body's responsiveness to the changing conditions. Changing conditions जो भी होती है उसके अगेंस्ट अपनी बॉडी रिस्पॉन्स करती है. सो ये रिस्पॉन्स देने का काम कौन करता है? न्यूरल टिश्यू. अपनी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो काम करती है वो नर्वस टिश्यू है. Neurons, the unit of the neural system, are excitable cells. So nervous tissue या neural tissue किसका बना है? Neurons, or also called as the nerve cells. So nerve cells are the structural and functional unit of the nervous tissues. Apart from the neurons, it also contains the neuroglial cells. Apart from the neurons, neurons तो होते ही है जो main cells है, बट न्यूरॉन्स के अलावा भी इसके अंदर सेल्स होते हैं एंड दिस सेल्स आर कॉल्ड एज द न्यूरोग्लिया. न्यूरोग्लिया और ऑल्सो दे आर कॉल्ड एज द ग्लायल सेल्स. वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूरोग्लिया और ग्लायल सेल्स. सो विच कंस्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम एंड इट प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट द न्यूरॉन्स. ओके, न्यूरोग्लिया का काम क्या है? जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको पैकेजिंग का काम देना या उनको प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट करने का काम किसका है? न्यूरोग्लिया का. ओके, जबकि न्यूरॉन्स मेन सेल्स है जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने वाली है, वो एक्साइट हो गए. न्यूरोग्लिया मेकअप मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी. व्हेन न्यूरॉन इज स्टिम्युलेटेड एंड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस इज जनरेटेड which swiftly travels along its plasma membrane. Okay, जब न्यूरॉन स्टिम्युलेट होगा उसको एक्टिवेट होगा. कैसे एक्टिवेट होगा? आइदर बाय केमिकल, आइदर बाय समथिंग एक्सेट्रा, हीट से, फिजिकली, ये सबसे न्यूरॉन क्या होता है? एक्टिवेट होगा. नाउ जैसे ही न्यूरॉन
एक्टिवेट होगा सो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल मैसेज, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगा। एंड ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुआ है, इट मूव्स वेरी क्विकली along the plasma membrane of the neuron. By the stimulation of the neuron, electrical disturbance is generated, and this electrical disturbance, it travels as a wave very quickly across the plasma membrane. Arrival of the disturbance at the neuron's endings or output zone triggers the events that may cause the stimulation or inhibition of the adjacent neurons and other cells. Now neurons क्या करता है, मैसेज जनरेट करता है एंड वो मैसेज के हिसाब से अपनी बॉडी रिस्पॉन्ड करेंगी। नाउ ये जो न्यूरॉन है ये उसके सेल है। सी स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ न्यूरॉन। ये न्यूरॉन का सेल बॉडी है। ये सेल बॉडी में से प्रोसेस निकलते हैं। देयर इज़ वन सिंगल प्रोसेस कॉल्ड एज एक्सॉन and there are many branched processes which are called as the dendrites. Okay, and this is a neuroglia which is a supporting cell. Okay, now students, what am I telling is के दो न्यूरॉन, सपोज न्यूरॉन कैसा होगा, से फॉर एग्जांपल ये एक न्यूरॉन है, ओके, एंड ये उस दूसरा न्यूरॉन है, ओके। ये दो न्यूरॉन के बीच में गैप रहता है, ये गैप को बोलते हैं सिनेप्स। वी विल स्टडी दिस इन डिटेल इन द लास्ट चैप्टर्स। सो क्या बोलते हैं, अराइवल ऑफ द डिस्टर्बेंस एट द न्यूरॉन एंडिंग। ये वाला न्यूरॉन एंडिंग है, ओके। दिस पार्ट, सपोज दिस इज वन ऑफ द न्यूरॉन्स, ये एक न्यूरॉन है, ओके। अभी ये न्यूरॉन का नर्व एंडिंग है। नाउ जैसे ही मैसेज डिस्टर्बेंस यानी नर्व इम्पल्स, तो जैसे ही ये डिस्टर्बेंस नर्व एंडिंग पे आया तो वो क्या कर सकता है, आइदर ये वाला न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को एक्टिवेट कर सकता है या उसे इनहिबिट भी कर सकता है, यानी उसको मैसेज अगर काम का नहीं होगा तो वो पास भी नहीं होने देगा। व्हाट एम आई ट्राइंग टू से स्टूडेंट्स, कि दो न्यूरॉन, सपोज ये एक न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन का नर्व एंडिंग है, दिस इज़ द नर्व एंडिंग। नाउ जब डिस्टर्बेंस यानी कि मैसेज ये नर्व एंडिंग पे आएगा, ये मैसेज क्या हो सकता है, आइदर ये वाले दूसरे न्यूरॉन को स्टिम्युलेट कर सकता है या वो उसको इनहिबिट भी कर सकता है। सो दैट इज़ रिगार्डिंग द न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू को हम डिटेल में लास्ट चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। एंड लास्टली लेट अस बिगिन विद द ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। हमने ये तो देखा कि अभी टिश्यूज़ हमने देख लिए। नाउ ये टिश्यूज़ वो प्रॉपर अमाउंट में ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाएगी, ऑर्गन्स। सो द बेसिक टिश्यूज मेंशन्ड, दे ऑर्गेनाइज टू फॉर्म द ऑर्गन्स which in turn associate to form the organ system in the multicellular organisms. So tissue बन गए, tissues क्या बनाएगा, organs, organs क्या बनाएगी, organ systems, and organ system finally क्या बनाएगा, multicellular organism. Such an organization is essential for more efficient and better coordinated activities of the millions of cells constituting an organism. कोई भी organism million of cells का बना है। As millions of cells are present, proper coordination होना बहुत ज़रूरी है। and ये coordination हुआ कैसे, cells ने group बना दिए tissues, tissues ने group बना दिए organs, organs ने बना दिए organ systems, and organ system ने पूरे organism को बना दिया। so ये proper जो coordination हुआ है एंड ये जो डिवीजन ऑफ लेबर हुआ है कि टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, तो बॉडी में वर्क डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है एंड दैट इज़ वेरी मच एसेंशियल फॉर द एफिशिएंट वर्किंग। ओके, ईच ऑर्गन इन आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ द टिश्यूज़। अपनी बॉडी के ऑर्गन्स किसके बने होंगे, टिश्यू, एंड ऑर्गन में है वन टिश्यू और मोर देन वन टिश्यू। से फॉर एग्ज़ाम्पल अपने हार्ट जो है
उसमें जो 4 बेसिक टिश्यूज़ है वो सब उसमें प्रेजेंट है. इट कंसिस्ट ऑफ ऑल 4 टाइप्स ऑफ द टिश्यूज़, epithelial, connective, muscular and neural. Heart is made up of all the 4 types of the tissues: epithelial, connective, muscular and neural. The heart consists of all these 4 types of the tissues. We also notice after some careful study that complexity in organ and organ system displays certain discernible trend. ओके जब आप ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी स्टडी करते हो तो यू विल सी सर्टन नोटिसेबल ट्रेंड, कुछ चेंजेस, कुछ ट्रेंड आपको ऑर्गन्स में दिखेगा. दिस डिसर्नेबल और नोटिसेबल ट्रेंड इज कॉल्ड एज द इवोल्यूशनरी ट्रेंड. See students, these are the various levels of the organization. Here you can see, see students, this is the molecular level कि जहाँ पे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं. सो एटम्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? सेल्स. सेल्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? टिश्यू, जैसे मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यूज. टिश्यूज ऑर्गन्स बनाते हैं. सो ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू. एंड फाइनली ऑर्गन सिस्टम जो which is made up of the different organs that work together closely, जैसे circulatory system, skeletal system, digestive system, nervous system, respiratory system etc. And ये सब system, so human organism is made up of many organ systems. So ये सब organ system finally organism को बनाते हैं. So that is the level of organizations which are found in human beings. The morphology and anatomy of the 3 organisms at different evolutionary levels gives the explanation to show their organization and functioning. So basically we will study the morphology and anatomy of the 3 organisms to study the evolution as well as to study the organization and functioning. Morphology का meaning क्या है? To study the form or externally visible फीचर्स. जब भी कोई ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल फीचर्स को हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी. इन केस ऑफ प्लांट्स और माइक्रोब्स द टर्म मॉर्फोलॉजी प्रिसाइसली मीन्स ओनली दिस. सो जब प्लांट्स की बात होती है या माइक्रोब की बात होती है उनके लिए मॉर्फोलॉजी मीन्स इन दैट कंसर्न it means the study of the external features. But when we talk about animals, it refers to the external appearance of the organs or part of the body. जब हम morphology को animal या zoology में consider करते हैं, so we deal with the external appearance of the organs or part of the body. Say for example, liver is the organ. Liver कहाँ पे present है? अंदर present है. बट लीवर इज़ अ पार्ट ऑफ द बॉडी और उसको जब स्टडी करते हैं देन उसके जब एक्सटर्नल फीचर्स को स्टडी करते हैं दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द मॉर्फोलॉजी. जबकि प्लांट में क्या सिर्फ बाहर के स्टेम, रूट और लीफ को सब बोलते हैं, लेकिन एनिमल्स में इट रिफर्स टू द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गन्स और पार्ट ऑफ द बॉडी. व्हेन आई से ऑर्गन्स इट इंडिकेट्स बोथ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल ऑर्गन. Whereas the word anatomy conventionally used for the study of the morphology of the internal organs in the animals. So students, in the next lecture we will be studying regarding the morphology and anatomy of the 2 organisms. In your book 3 organisms are mentioned. One is frog, another one is earthworm and third is the cockroach. According to the new syllabus or you can say the syllabus which have been removed, उसमें से cockroach को remove किया है. So we will be studying the morphology and anatomy of the 2 animals. One is the earthworm and another one is the frog. I end my lecture here. Thank you students.